Hi friends, today the session is about chemical reaction and equation. This is the first chapter of 10th class science Ncert. So here we proceed. Here are some of the situations of chemical reaction. Firstly, we should know the difference between chemical reaction and physical reaction. तो फिज़िकल में क्या होता है कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है. जैसे कि स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, अगर हम रबर बैंड को स्ट्रेच कर रहे हैं तो क्या कोई नई रबर बैंड फॉर्म हो रही है, कुछ नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है? नहीं हो रहा. और क्या हम वो वापस जो रबर बैंड को स्ट्रेच कर रखा है उसको हम वापस सेम पोजीशन पे ला सकते हैं? येस, वी कैन ब्रिंग इट बैक. सो द चेंजेस विच आर टेम्पररी, the changes which are temporary and no new substances form. For example, the stretching of rubber band, if we are pulling or pushing something, so these changes are what? These changes are physical change. But the chemical change is just reverse of the physical change. Here what is happening is the new substances form and these changes are permanent change. Here the mass of the constituent may also change, and the thing is the new substance is formed and that cannot be changed or cannot be reversed into the previous substance. Suppose they have given some example here. So milk when changed into curd, can you get the milk back from the curd? It is not possible. Okay, when the tawa, pen or etc are exposed to the humid atmosphere, what happens? Corrosion क्या होती है? This is also in the previous slides. You will see corrosion क्या होती है? जंग लग जाती है. क्या उस जंग को हम वापस कर सकते हैं? Not possible. And the grapes are getting fragmented. एक बार fragment हुए तो उसको these all are the examples of chemical change. Food एक बार cook हो गया, सब्जी एक बार बन गई, क्या उस सब्जी से हम वापस सब्जी ला सकते हैं? Not possible. Food digested in our body, we can't. And we respire respiration is also what kind of change? It is also a chemical change. Yes, it is a chemical change because glucose is breaking down into carbon dioxide and water. So it is a chemical change because glucose से हमें क्या मिल रहा है? दो नए substance मिल रहे हैं. तो ये कैसा change हो गया? हमारा chemical change हो गया. Now in the activity what it is done, magnesium ribbon, एक magnesium ribbon को लिया गया है and उसको burn किया गया है, and before burning we have to clean the magnesium ribbon. magnesium ribbon को हम क्यों clean कर रहे हैं? मैग्नीशियम रिबन को हम इसलिए क्लीन कर रहे हैं क्योंकि जो मैग्नीशियम है वो जल्दी से रिएक्ट कर लेता है ऑक्सीजन के साथ और मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बना लेता है. तो उस लेयर को क्लीन करने के लिए वी आर रबिंग इट एंड मेकिंग द मैग्नीशियम क्लीन. एंड व्हेन वी बर्न मैग्नीशियम व्हाट विल हैपन? विल गेट द पाउडर सब्सटेंस आफ्टर बर्निंग, एंड दिस पाउडर सब्सटेंस इज व्हाट? इट इज एक्चुअली द मैग्नीशियम ऑक्साइड. So magnesium when reacts with oxygen will give magnesium oxide. Now when the magnesium is burned with oxygen, it is giving white drizzling flame is released and we get the white powder. This is the reaction and this is taking place in the activity. Now we will move towards the activity number 1.2. It is basically we are taking the lead nitrate and potassium iodide. When we take lead nitrate and potassium iodide, they both will react, and what will happen? It is actually a double displacement reaction. This also we will see in the previous slides. Now in the activity 1.3 they have given zinc granules we are taking in the conical flask and then we are adding hydrochloric acid. जिंक में हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक का फॉर्मूला क्या होता है? Zn. उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे प्लस HCl विल गिव ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, फ्रॉम द 3 केमिकल रिएक्शन वी हैव सीन, फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज़ वी हैव सीन कि केमिकल रिएक्शन जब भी हमारा होता है तो क्या चीज़ें होती हैं? फर्स्टली द चेंज इन स्टेट होता है, सेकेंडली द चेंज इन कलर होता है, फिर क्या होता है? इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो सकती है एंड चेंज इन temperature. So these 4 are the key points which tells us when the reaction takes place, when the chemical reaction is taking place or not. So what are those things? Change in state, change in color, evolution of gas, change in temperature.
So next we move towards chemical equation. Chemical equations को कैसे लिखते हैं? Chemical equations को हम words में भी लिख सकते हैं और उनके formulas में भी लिख सकते हैं. तो यहाँ पे जैसे कि हमारा formula है मैग्नीशियम ऑक्साइड, अभी हमने पढ़ा था मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था ऑक्सीजन के साथ. व्हाट वी वर गेटिंग, वी यूज्ड टू गेट द वाइट कलर सब्सटेंस एंड दैट मैग्नीशियम बर्न्स विद द drizzling white color flame. So this equation can be written as magnesium plus oxygen will give magnesium oxide. Here the right side of the equation is known as the product and the left side of the equation is known as the reactants. तो यहाँ पे हमारे reactants कौन कौन से हैं? यहाँ पे हमारे reactants है magnesium and oxygen. Magnesium and oxygen हमारे क्या हैं? Reactants हैं. और इन reactants ने हमें product क्या दिया है? Magnesium oxide as a product दिया हुआ है. So this is the way to write the chemical equation. So this thing also, see here it was written in magnesium oxide, it was fully written in the name format. So here this we can write in the formula or symbol way also. The formula of magnesium is Mg and formula for oxygen is O2. तो इनको हमने ऐसे लिख दिया Mg plus O2 will give magnesium oxide. अब यहाँ पे सोचने की चीज़ ये है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के magnesium oxide MgO formula कैसे बना. So this we have studied in the 9th class if you remember. So we have studied in the 9th class that magnesium की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है. ऑक्सीजन की वैलेंसी भी कितनी होती है? 2 होती है. So we'll do the cross multiplication and 2 and 2 will cancel and 1. So magnesium 1, oxygen 1. So magnesium oxide. ठीक है, आपको समझ में आया? 9th क्लास में पढ़ा होगा. So the next topic is balancing a chemical equation. Chemical equation को balance करने की हमें इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि we know that the number of atoms on the reactants is directly and exactly the same as the number of atoms on the product. इससे क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन का रूल फॉलो करती है. जितने भी एटम्स हमारे रिएक्टेंट्स में यूज़ हुए हैं उनका नंबर ऑफ एटम्स जो है हमेशा कंजर्व रहेगा और वही नंबर ऑफ एटम्स हमारे प्रोडक्ट में होंगे. तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है Zn जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हेन रिएक्ट Zn प्लस H2SO4 रिएक्ट करें तो ZnSO4 एंड प्लस hydrogen gases evolved. So here this equation is balanced. The table is given. You can see the number of atoms on the left hand side is exactly equal to the number of atoms on the right hand side. So we are saying that this equation is basically a balanced equation. But the next equation of Fe plus H2O, Fe3O4, here we see that the equation is unbalanced and they have given some steps to balance it, and these steps may change from various equation to equation, and you need to multiply the numbers, the elements by some whole numbers, and you can divide even so that the number of atoms of the particular element is same both on the reactant side as well as on the product side. और इसमें हम एक और चीज़ कर सकते हैं, we can mention the state of the atom or the element also. कौन सा state है? Suppose they have given here, suppose to make the chemical equation more informative, the physical state of the reactant and the product are mentioned along with the chemical formula. Suppose they are in the gaseous state, liquid state, कोई भी state में aqueous. Aqueous is basically the solution form of that thing. So the aqueous form AQ is also written. इसको ये more informative, थोड़ा सा informative लगता है आपका equation. So we can write this. So here is the equation. Fe is used in the which form? Solid form. And H2SO is in which form? Gaseous form. And Fe3O4 is also in the solid form. And H2 gases evolved, so G for gaseous form. This also, and sometimes we can write the temperature or the pressure also. Sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst. Catalysts are basically the agents which are increasing the process of reaction. So we can write the catalyst also. Suppose in this reaction where the glucose is formed,
carbon dioxide plus water in the presence of sunlight and glucose. This is what? This is basically catalyst. These are the sunlight and chlorophyll. हमारे किसका काम कर रहे हैं? कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये रिएक्शन को कैसा कर रहे हैं? फास्ट कर रहे हैं. तो उसकी वजह से क्या बन रहा है? ग्लूकोज बन रहा है और वाटर बन रहा है. सो दिस इज द वे टू राइट केमिकल इक्वेशन. Then we will move towards some questions which are given here. See, the first question is why magnesium ribbon is clean. This all I have already explained. क्यों clean किया गया था? क्योंकि वो मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड की अपने ऊपर लेयर बना देता है. तो उस लेयर को रिमूव करने के लिए हमने उसको रब किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द बैलेंस. दिस आई विल गिव यू इन द नेक्स्ट video. I will show all these questions answer in the next video. The next is also the balanced chemical equation they have to write. Okay, so now here we'll study the types of chemical reaction. So basically there are 4 types of chemical reaction. पहला होता है combination. First is combination, next is decomposition, next is displacement, and last one is double displacement, as well as fifth we can count as oxidation and reduction reaction. So we can basically say that there are 5 reactions. There are basically 5 types of chemical reaction. So we will study with the first type, that is combination reaction. Combination ऐसे word आपका suggest कर रहा है कि चीज़ें combined हो रही हैं. ऐसा reaction जिसमें एक या 2 से ज़्यादा चीज़ें combined हो. The reaction in which 2 or more reactant combine to form a single product. That is known as the combination reaction. जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा reactants हमारे combine कर रहे हैं और एक product बना रहे हैं. जैसे कि यहाँ पे example दे रखा है कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड अगर react करता है water के साथ तो क्या देता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है. अब कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? क्विक लाइम बोलते हैं. और ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना देता है? स्केट लाइम बना देता है. और इसको हम वॉशिंग, जो वाइट वॉशिंग होती है, जो चूना होता है, उसके वी आर यूजिंग इट फॉर वाइट वॉशिंग ऑल्सो. एंड वेन वी आर यूजिंग इट फॉर द पेंट इन द वाइट वॉशिंग, आफ्टर 2-3 days व्हाट हैपन्स? इट रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड. ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर लेता है और हमारा क्या बना देता है? और हमारा बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट. ओके, सो वील प्रोसीड. The same thing is written in this box which is mentioned here. A solution of skate lime produced in the reaction is used for whitewashing the walls. It is used for what? Whitewashing. Calcium hydroxide reacts slowly with carbon dioxide in the air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls. Calcium carbonate is formed after 2-3 days of whitewashing and gives a shiny finish to the wall. This is interesting to note that the chemical formula for the marble is also CaSO4. So the formula for marble is also what? Calcium carbonate formula, and marble formula is, both the formula is same. So they have mentioned the equation over here. Next is what? One more example, burning of coal. Burning of coal is what is happening? Carbon is burning in the presence of oxygen, so it will give carbon dioxide. In the same way, formation of water, hydrogen plus oxygen will give hydrogen oxide. So here we see the large amount of energy is evolved. Means energy बाहर दी जा रही है, energy का release हो रहा है. So the reaction in which energy is released, such a reaction is known as what type of reaction? These are basically exothermic reaction. You can see in the 3rd line of the slide. The reaction in which heat is released along with the formation of product. Heat release हो रही है, formation of product भी हो रहा है. This types of reaction is known as exothermic reaction. Basically there are 2 types of reaction, exothermic and endothermic. So जहाँ पे energy release होती है उसको बोलते हैं exothermic reaction, और जहाँ पे energy absorb होती है उसको बोलते हैं endothermic reaction. तो यहाँ पे combination reaction को पहचानने के लिए the thing is that it is always an exothermic reaction. कोई भी combination reaction होगा उसको पहचानने के लिए we can say that it is a exothermic reaction. and इसका just reverse होता है decomposition reaction. Decomposition reaction में क्या होता है?
आपकी एनर्जी का यूज़ होता है, when the energy is used, when the energy is absorbed, then it is एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वैसे ही उसका जस्ट रिवर्स जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। So now they are saying that the food we eat, basically the respiration is also an exothermic reaction. This I have explained previously कि respiration में क्या होता है? respiration में जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होता है किस में? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो ये कैसा प्रोसेस है? एक केमिकल रिएक्शन हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया। इन द सेम वे दे आर सेइंग कि जो रेस्पिरेशन है क्या वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? यस, इट इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। Why? It is because the carbohydrates is broken down into glucose। जो कार्बोहाइड्रेट्स हम फूड में खाने में खाते हैं उसमें क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट्स होती है, वो किस में टूट जाती है? ग्लूकोज में। फिर ग्लूकोज क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे कि दे हैव गिवन द एग्जाम्पल, दे हैव गिवन द इक्वेशन। सो ग्लूकोज C6H12O6 ये किसके साथ कंबाइंड हो रहा है? ऑक्सीजन के साथ। इट इज कंबाइंडिंग विथ ऑक्सीजन, दैट इज O2। तो इससे हमें क्या मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड energy. So this is what type of reaction? Keep in mind that the respiration is what type of reaction? It is exothermic reaction. Why? Because we are getting energy from food. Energy मिल रही है तो ये exothermic reaction है। नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी मैंने एक चीज़ समझाई है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमेशा कैसा रिएक्शन होता है? एक एंडोथर्मिक, क्योंकि इसमें हमें कोई भी चीज़, कोई भी एनर्जी के फॉर्म में, हीट हुई, लाइट हुई, टेम्परेचर हुआ, इसकी ज़रूरत पड़ती है। वी एब्जॉर्ब दोज थिंग्स टू फॉर्म द प्रोडक्ट। दे हैव गिवन द वन एग्जाम्पल, ferrous sulfate breaks down into FeO3 plus SO2 plus SO3. So it is ferric oxide. Ferrous sulfate is breaking down into ferric oxide plus ferric dioxide and plus ferric trioxide. So this is what decompose name itself is suggesting कि small particles में, small substance में आपका break हो रहा है। तो क्या है? आपका एक reactant, we are taking one reactant and we are getting multiple product out of that reactant. So it is what? It is a decomposition reaction. Now decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction used in various industries. So this reaction, that is limestone we have already studied. Calcium carbonate washing powder, whitewashing, it's not washing powder, extremely sorry, it's whitewashing, it is used for whitewashing. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि यूज़ हो रहा था वाइट वॉशिंग के लिए, फिर वो रिएक्ट कर रहा था कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड से 2-3 दिन में तो फॉर्म कर रहा था कैल्शियम कार्बोनेट। सो हियर ऑल्सो द कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज व्हाट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। one more example is lead nitrate powder when heated. So what happens is lead nitrate powder when heated will give lead oxide plus nitrogen and oxygen. Now the electrolysis of water. The electrolysis of water is also which type of reaction? It is also a decomposition reaction. Why? Because H2O एक हमारा reactant है and that is breaking down into hydrogen and oxygen. So it is also a decomposition reaction. So here we are using one mug and in the bottom of the mug we are making 2 holes. And we are using electrolyte as a water, and that water हमें पता है कि जो वाटर है, जो प्योर वाटर है, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो हम वाटर में क्या डाल देंगे? we'll add few drops of acid. We can use hydrochloric acid also as well as sulfuric acid also, whatever you have that you can use. So basically our electrolyte is what? Acidified water.
एसिडिफाइड वाटर को हमने यूज़ किया, उसके बाद 2 इलेक्ट्रोलाइट, उसको इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दी. देन व्हाट विल हैपन? देन यू विल सी द बबल्स. Then you will see the bubbles in the test tube. You can see in the figure, one test tube is having just double the bubble in the as compared to the other. This is, ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, जो हमारा वाटर है H2O, उसका फॉर्मूला क्या है? H2O, मतलब कि हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन एटम इज हाउ मच? in one molecule of water, 2 hydrogen, H2O, 2 hydrogen are there and 1 oxygen is there. So that is why the bubble formation in one test tube is just double to that of the other test tube. समझ में आया ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि एक टेस्ट ट्यूब में क्या है? हाइड्रोजन फॉर्म हो रहा है, जिसमें जस्ट डबल एटम है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन. इसलिए एक टेस्ट ट्यूब में जस्ट डबल बबल्स हैं एज कम्पेयर टू द अदर test tube. Next is the silver chloride. Silver chloride react करता है sunlight में and it is giving silver plus chloride, and this reaction is basically using one catalyst, that is sunlight. Here you can see on the arrow, top of the arrow, it is written sunlight. So sunlight is acting as a catalyst over here. Next is the photography reaction, that is silver bromide. Silver bromide react करता है sunlight के साथ and that is also the same thing, it is giving silver plus bromide. So this is decomposition reaction. So we have seen in the decomposition reaction requires energy either in the form of heat, light or electricity for breaking down of reactants in which energy is absorbed. So this is what type of reaction? Endothermic. And previously it was what type of combination reaction? Was exothermic reaction, and this is endothermic reaction. दोनों में difference समझ में आया? Okay, then move towards the question. They are saying a solution of X is used in whitewashing. देखिए यहाँ पे question को अच्छे से पढ़िए. Solution use हो रहा है. किसका solution use करेंगे? We have studied in the previously that calcium oxide when reacts with water will give calcium hydroxide. तो calcium oxide हमारा substance है, calcium oxide CaO, जो कि यूज़ होता है वाइट वॉशिंग में. फॉर्मूला क्या है इसका? CaO है. रिएक्ट करता है वाटर के साथ. CaO plus H2O will give CaOH whole twice. So the next is, they are asking why the amount of gas in the test tube. So just now we have seen the electrolysis of water and they are asking कि एक टेस्ट ट्यूब में डबल बबल्स क्यों फॉर्म हो रहे थे एज कम्पेयर टू द अदर. तो क्यों हो रहे थे? क्योंकि हमारा एक जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से एटम से बनता है. दैट इज़ वाई जो एक टेस्ट ट्यूब थी उसमें बबल जस्ट डबल थे एज कम्पेयर टू द अदर टेस्ट ट्यूब. Next is what? Next is displacement reaction. Here is one activity. In this activity we have to take 2 test tube filled with copper sulfate solution and the 2 iron nail. One for comparison we have to use. So when we will dip the iron nail in the copper sulfate solution, we will see that the color of the iron nail turns to the brownish color, and the solution and the test tube which is having the solution of copper sulfate solution, that is of blue color, and it will turn into the pale blue color. You can see the comparison is shown here. Iron nail जो कि आपके silver color की थी, that have changed into the brownish color, and here also the copper sulfate solution and test tube A have changed to little, the color have been faded, and this is due to the displacement reaction which took place. Displacement किसने किसका किया है? आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया है कॉपर को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से, एंड इट हैव फॉर्म्ड फेरस सल्फेट प्लस copper. So this is what? Displacement reaction. A highly reactive metal is displacing the other metal from its solution. The same thing, the same examples are shown here. Zinc plus copper sulfate solution. When zinc react with copper sulfate solution, the same thing happens. Zinc displaces copper and forms zinc sulfate. In the same way, when lead react with copper chloride, so what happens? Lead chloride is formed and copper is displaced. So lead chloride is formed and copper.
Next is double displacement reaction. Double displacement, what is happening? Both the elements are simultaneously displacing and the precipitation is formed. Here the best thing to identify double displacement reaction is the formation of precipitate. Precipitate is what? It is a dark color. It is a dark color which is formed above the solution. It is a dark white color insoluble substance that is formed in the top of the test tube filled with the solution. So this is the identification of the double displacement reaction. Here the example is given: sodium sulfate reacts with barium chloride. When sodium sulfate reacts with barium chloride, what is happening? Barium sulfate is formed. Barium sulfate, in this what is happening? Barium have displaced sodium. In the same way, barium have displaced sodium. In the same way, sodium have displaced barium. So both the simultaneous displacement is taking place. So this reaction is known as double displacement reaction. इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? अगर हमारे रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेशन इज फॉर्म, देन इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो द क्वेश्चन हियर इज प्रेसिपिटेशन क्यों फॉर्म होती है? प्रेसिपिटेशन इसलिए फॉर्म होती है बिकॉज टू डिफरेंट एटम्स exchange of ion is taking place. See here, the white precipitate is formed of barium sulfate. So sulfate is what? -2. Barium is what? +2. So these, the exchange of ion is taking place. So precipitate किसकी form हुई? Barium sulfate की. Got it? The precipitation is formed of barium sulfate solution. Now here are some questions. They are asking, when the lead nitrate solution is mixed with potassium iodide, lead nitrate, that is PbNO3 whole twice, when mixed with Ki, that is potassium iodide, तो क्या फॉर्म होगा? lead iodide फॉर्म होगा प्लस potassium nitrate. So the precipitate किसकी मिलेगी? Precipitate will be of yellow color and that will be of lead iodide, PbI2. And this is a double displacement reaction. Double displacement reaction है. This I will show you in the next video. Everything in the written format. I will show all the reactions regarding the chapter. I will show you in the written format. So the next reaction is oxidation and reduction reaction. Oxidation, what is happening? The addition of oxygen in a reaction is known as oxidation. When a substance get oxidized by taking oxygen, such reactions are known as oxidation. And when the substance is losing oxygen in a reaction, that is said to be reduced. So simultaneously both the processes are taking place, oxidation as well as reduction. So such reaction is known as oxidation and reduction reaction. So here the example is given: Cu plus O, copper plus oxygen will give copper oxide. So here copper is getting oxidized. In the same way, copper when reacts with hydrogen, copper oxide when reacts with hydrogen, it is getting reduced. So the next example is copper oxide plus hydrogen. Here what is happening? Copper is getting reduced as well as hydrogen is getting oxidized because the addition of hydrogen is changed into water. So the addition of oxygen is taking place, but in the place of copper oxide, the removal of oxygen, so it is getting reduced. So this type of reaction is known as redox reaction. In the same way, the example of zinc oxide plus carbon, zinc में से ऑक्सीजन का रिमूव हो रहा है तो क्या है? ये रिड्यूस हो रहा है. और यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन चेंज हो रहा है CO में, it is getting oxidized. In the same way, magnesium oxide plus hydrochloric acid is giving magnesium chloride plus water plus Cl. So magnesium is getting what? Reduced. Hydrochloric acid is getting, hydrogen is getting oxidized over here. So the next is recall activity, where the magnesium ribbon burns with a drizzling flame in the air and changes into the white substance magnesium oxide, the magnesium being oxide or reduced. So here they are asking the magnesium का हमने जब first
starting of the chapter में we have done one experiment. We have burned magnesium ribbon to, and it have given magnesium oxide. So they are asking what type of reaction it is. So it is naturally magnesium क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, तो कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. नेक्स्ट इज, I think this is the last topic of the video, and it is regarding corrosion. Corrosion basically what, corrosion को हिंदी में बोलते हैं जंग लगना. Corrosion, agents of corrosion is what? Agents of corrosion is moisture, acid, air. All these are the agents of corrosion. And what happens is when the iron substance is kept in the moisture, and these condition, moisturous condition, or where the air is there, it is kept open. So what happened? A layer of it have been corrode. A layer have been formed on the top of its. corrosion मतलब जंग लग जाती है, एक लेयर सी फॉर्म हो जाती है ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर की, and that is known as, the process is known as corrosion, and that layer is known, that substance is said to be corrode substance. That is why we are using paints and all in the channel gate. If we are having channel gate, all the iron gates, iron chair, many things we have seen that are been painted. पेंट इसलिए किया जाता है कि उसको जंग से बचाया जाए, जिससे कि वो एजेंट से डायरेक्टली रिएक्ट ना करे. इन द सेम वे द कॉपर, सिल्वर, ऑल दीज आर गेटिंग रिएक्टेड with the moisture present in the atmosphere and the color have been changed, तो इसको सेव करा जाता है. So the last thing here you can see in the paragraph, corrosion causes damage to the car bodies, bridges, iron railing, ships, and all substance made up of metals, especially those of iron. Corrosion of iron is a serious problem. Every year, an enormous amount of money is spent to replace the damaged iron. Next, you will learn in the chapter 3. Now, the next topic is rancidity. Rancidity is what? When the eating material, जो भी हम खाना वगैरह खाते हैं, उसमें अगर हमारे फैट्स और ऑयल होते हैं, तो क्या होता है, बहुत दिनों तक अगर वो खुले हुए रखे रहते हैं तो उसमें से अजीब सी स्मेल आने लगती है. And then we used to say, and we used to call that the food item has become rancid. When the fats and oil are oxidized, they become rancid. It is getting what? It is getting oxidized. So they become rancid. Their smell and taste changes. Usually substance which prevents oxidation. The substance which is preventing oxidation, such as antioxidants, are added in the paper of in the chips packet and all. You have seen nitrogen gas is filled. The gas is more than the chips. We call it as the कि उसमें हवा ज़्यादा है, चिप्स कम है. तो उसमें हवा क्यों यूज़ होती है? वहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट के जैसे यूज़ होती है, ऑक्सीडेशन से बचाती है. अगर हमारा ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो वो सब्सटेंस कैसे हो जाएंगे? रेंसिड हो जाएंगे. देन इट विल स्मेल एंड इट विल टेस्ट ऑफ द सब्सटेंस, द टेस्ट ऑफ द फूड विल change. So that is why we are using antioxidants in those packets and all to save the food from getting rancid. So here are few questions. Why does the color of the copper sulfate that we have already discussed, the color of the copper sulfate in the above activity have changed? Why? Because iron have displaced the copper from copper sulfate solution. So the displacement reaction have taken place, and thus the color of the copper sulfate solution have changed. Next is give an example that I'll give you. Identify the substance that is getting oxidized and reduced. Identify the substance. Yeah, sodium plus oxygen will give sodium oxide. So sodium Na क्या हो रहा है? Oxidize हो रहा है. Got it? Na में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है. Na चेंज हो रहा है Na2. तो Na क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है. Now the next is copper oxide plus हाइड्रोजन. तो कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है. एंड हाइड्रोजन क्या हो रहा है? हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है. एंड दिस रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन. व्हाई? बिकॉज कॉपर के साथ ऑक्सीजन लगा था रिएक्टेंट में, बट प्रोडक्ट में अकेला कॉपर रह गया. दैट इज इट इज रिड्यूस. इन द सेम वे हाइड्रोजन जो था उसने ऑक्सीजन को गेन कर लिया है. सो इट इज ऑक्सीडाइज. सो इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन.
Thank you. If you like my video, please subscribe to my channel. Thank you very much.